chapter 10, and we are doing verse number 14. Narundhan Udgalad Bashpam औत्कान्त्याद देवकी सुते निर्याति अगरान्नो भद्रम इति स्याद् बांधवास्त्रिया न्यारुध्यम। इसका मतलब क्या होता है? बड़ी मुश्किल से उद्गलाद, है ना, रोने का ओवरफ्लो हो रहा है। कैसे रो रहे हैं लोग, है ना। लेट्स सी द ट्रांसलेशन। द फीमेल रिलेटिव्स whose eyes were flooded with tears out of anxiety for Krishna came out of the palace. They could stop their tears only with great difficulty. They feared that tears would cause misfortune at the time of departure. हमारे जो आचार्यज हैं, they actually speak about this verse and they say कि ये जो डर था इनका, ऑल द डिवोटीज जो है, इनका जो डर था, दे फियर्ड दैट द टीयर्स वुड कॉज मिसफॉर्च्यून। दो रीजन से, एक मिसफॉर्च्यून ये था कि कहते हैं ना किसी के जाते वक्त रोना नहीं चाहिए, अपशगुन होता है। एंड द सेकंड इज when they have tears for that moment, they are unable to see Krishna. So they are actually in a conundrum कि करें क्या यार। I have to cry, I can't stop crying, but if I cry then I can't see Krishna for that much because he's already leaving. So it is very interesting. If you see, Srila Prabhupada will talk about an amazing purport anyway, but what's happening here is कि ना पिछले वर्ष में भी हमने देखा था हाउ एवरीवन, बिकॉज कृष्णा इज लिविंग, दे आर सो वरीड कि क्या हो रहा है। और हम लोगों को लगता है व्हेन वी रीड दिस श्रीमद् भागवतम, वी थिंक ओ यार हमारे पास तो इमोशन है नहीं, है ना। वी डोंट हैव दैट इमोशन, कि जैसे कभी ऐसा होता है कि हम मंदिर से बाहर निकले हैं और हम रो रहे हैं, अरे यार मंदिर से वापस जा रहा हूँ। कभी हुआ ऐसा? वी नेवर डू दैट बिकॉज the thing that these guys are feeling is of a different, completely different level, है ना। हमारा क्या, हमारे साथ ऐसा नहीं होता है क्योंकि हम लोग वी आर एक्चुअली एस्पायरिंग टू गेट देयर। हमारे पास वो इमोशंस हैं जो यहाँ पर डिवोटीज के हैं, लेकिन वी डोंट हैव एक्सेस टू इट एट द मोमेंट बिकॉज that heart which is these people's heart which is crying is very soft, very very soft, है ना। और हमारा जो हार्ट है, इट हैज so much of covering of lust, anger, greed, envy, pride, that it became like a solid rock from outside. So when we do bhakti, the idea is to get rid of that solid rock slowly and gradually, and get to the original state of our heart, which is always in loving ecstasy for Krishna. All right, so anybody wants to read the purport? I can read everything. Okay. There were hundreds of ladies in the palace of Hastinapur. All of them were affectionate to Krishna. All of them were relatives also. When they saw that Krishna was going away from the palace for his native place, they were very anxious for him. And as usual, tears began to roll down their cheeks. They thought at the same time that tears at the moment might be cause of misfortune might be a cause of misfortune for Krishna. Therefore they wanted to check them. This was very difficult for them because the tears could not be checked. Therefore they smeared their tears in their eyes, and their hearts throbbed. Therefore ladies who were the wives and daughter-in-laws of those who died in the battlefield never came in direct contact with Krishna, but all of them heard of him and his great activities, and thus they talk of him and his name, fame, etc. And because and became affectionate also, like those who were in direct contact. Therefore, directly or indirectly, anyone who thinks of Krishna, talks of Krishna, or worships Krishna become attached to him. Because Krishna is absolute, there is no difference between his name, form, quality, etc. Our intimate relation with Krishna can be confidentially revived
by our talking of, hearing of, or remembering him. It is so done due to the spiritual potency. Hare Krishna. Hare Krishna. Beautiful. Very nice. What an amazing purport. Every time I read Srila Prabhupada's purport, I actually think कि अगर ये purport नहीं होते, I don't know what I would have made out of this one sentence saying the female relatives, they wanted to cry, they couldn't cry, it was very difficult. That's it. You know, and they don't want to cry because they think that it's gonna be a अपशगुन हो जाएगा. But what it means to us, then Srila Prabhupada brings it home. You know, what Srila Prabhupada spoke about in this particular verse is he was telling us what is the difference between us as a conditioned soul and these people in Hastinapur जो भगवान के जाने पे इतना रो रहे हैं, है ना? Now, when I was preparing for this class, I thought of something, think about, I'll stop sharing. Think about Krishna and think about अपना Sachin Tendulkar, ठीक है? So Sachin Tendulkar is famous, is loved by so many people in India, god of cricket and all those sort of things they call him. How do people come to love Sachin Tendulkar? The only reason why they come to know is they have seen him play, they have seen him, they've heard about his playing, they've listened to the commentary. Some people have listened to the commentary, some people have watched him play, some people have seen highlights, some people have actually sitting in a congregation where they are all Sachin Tendulkar fan and they're all talking about how amazing he is, this is what he's done, this is what he's done. When we hear and talk about a certain personality in a positive manner, where we are actually glorifying that person, automatically there is a tendency for every heart to start getting fond of that person. होता है ना? And this is exactly, ये तो बिल्कुल material बात कर रहा हूँ. I'm not comparing Sachin Tendulkar with Krishna. What I'm saying is, Krishna wants us to actually think of him, remember him, worship him, talk about him, not because he likes to hear his own glory, because he understands that the only way we all can get purified is if we actually hear something which is extremely potent. क्योंकि हमारी जो conditioning है वो बहुत वैसी है ना? सो उस कंडीशनिंग को हटाने के लिए बहुत पोटेंट हियरिंग चाहिए हमें. मतलब कोई ऐसी चीज के बारे में हमें सुनना है जो हमारी जो आसक्ति मटेरियल चीजों पे है उसको वो ओवर पावर कर दे. एंड द ओनली थिंग दैट एग्जिस्ट इज व्हेन वी हियर द नेम, फेम, glorification of Krishna, because according to Srimad Bhagavatam, according to our acharyas, according to the all the scriptures, there is no difference between Krishna, his name, his fame, his pastimes. There is no difference at all. Even there is no difference between his name, fame, and his devotee's name and fame. For example, हम लोग के साथ क्या है, जैसे this is a glass of water. If I say water, 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 my thirst is not going to be quenched. क्योंकि there is a difference between the word water and actual water. However, if you, in terms of Krishna, because he's absolute, there is actually no difference. According to our scriptures, there is no difference between the name Krishna, the form Krishna, the pastime of Krishna, the glorification of Krishna. There is actually no difference. So when I say Krishna, he's actually in his Purna form present in this, in between us right now, because there is no difference between him and his name, his pastime, and his paraphernalia. No difference whatsoever. And that is why it becomes really, really potent. Now, what happens is, if you look at the verse, it says in here, there were hundreds of ladies in the palace of Hastinapur. All of them were affectionate to Krishna. Now, there is a key in this verse. What is the key in there? Hang on, we'll get to that. All of them were
रिलेटिव्स ऑल्सो, है ना, इनके रिलेटिव पांडवा के रिलेटिव्स हैं, पांडव के जो रिलेटिव वो कृष्णा के भी रिलेटिव है ना. सो व्हेन दे सॉ कृष्णा वाज गोइंग अवे फ्रॉम द पैलेस, दे वर वेरी एंशियस फॉर हिम, एंड द यूजुअल टीयर बिगिंस टू रोल डाउन द cheeks. They wanted to check them, they can't do it because it was extremely difficult, है ना. So what उन्होंने क्या, but their hearts throbbed, है ना. Now शीला प्रभुपाद यहाँ पर बड़ा अच्छा पॉइंट बोलते हैं, कहते हैं कि बट सो कहते हैं कि therefore ladies who were the wives and daughter-in-laws of those who died in the battlefield never came in direct contact with Krishna. जैसे हम लोग भी हैं, we haven't been in direct contact with Krishna, but all of them have heard of Krishna and heard his great activities, which we have done as well. हम लोगों ने इतने सारे भगवत गीता श्रीमद् भागवतम के लेक्चर सुने हैं, आचार्य को सुना है. We heard of Krishna, we have heard his great activities, है ना. Thus they have thought of him. हम लोगों ने भगवान के बारे में सोचा है. Talked of him. हम भी भगवान कृष्ण के बारे में कितनी बार बातें कर रहे हैं. Now we are discussing as well. They talked to him, his name, fame, etc. And because of this, they became affectionate also. कैसे, किस तरह का affection? As if they were in direct contact. What does that mean? This is another indication in here, which means that there is actually no difference between the form of the Lord and actually his pastimes and glories of the Lord. And that's why when we are reading and hearing the Srimad Bhagavatam, the purification that is happening right now is millions of times more than any kind of purification anybody can ever have. You know, एक एक मिनट का ये श्रीमद् भागवतम is gonna erase millions of lifetimes of sinful activities, and not only sinful activities, it will root out. अगर हम इसको कॉन्स्टेंटली करेंगे, इट विल रूट आउट द सीड, बिकॉज ऑफ दैट हम लोग सिंफुल एक्टिविटीज करते हैं. जो हमने पहले भी बात करा था, बीजम कूटम के बारे में बात करा था ना, इट एक्चुअली गेट्स gets out the whole बीजम. बीज मीन्स द रूट कॉज ऑफ ऑल आर मिजरीज, है ना. सो शिला प्रभुपाद कह रहे हैं देयरफॉर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. डायरेक्टली का मतलब क्या हो गया, हाँ डायरेक्टली हम कृष्णा की बात कर रहे हैं. इनडायरेक्टली क्या हो गया, इनडायरेक्टली ये हो गया, अरे मिथुल प्रभु, व्हाट वर्ड्स आर यू गोना डू नेक्स्ट क्लास, है ना. ये इनडायरेक्ट हो गया. हम कृष्णा की बात कर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बात कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं वो एक्चुअली रिलेटेड कृष्णा की है. या फिर टुमारो विच इज फ्राइडे, यहाँ पर वेरेबी में जो प्रोग्राम होने वाला है कंबाइंड भक्ति वृक्षा, उसमें कुछ सेवा का काम है. इट्स एन इनडायरेक्ट थिंग, हम लोग इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट कृष्णा, बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग फॉर कृष्णा, है ना. सो व्हेन समवन डज दैट, व्हेन दे डू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, who thinks of Krishna, talks of Krishna, worships Krishna, what happens to him? He becomes attached to Krishna. So if we become attached to Krishna, we cannot be simultaneously attached to material energy as well. ऐसा नहीं हो सकता, because Krishna is so pure that when we get attached to Krishna, हमारा और सारा जो attachment होगा ना, it will be gone. When I say gone, इसका मतलब ये नहीं कि we'll stop, I will stop loving Narayan just because I'm in love with Krishna. No, no, no. That means कि जो the love that I have for Narayan right now is based on very selfish thing. You know, I will, like for me, नारायण इज माई सन. व्हेन आई से माइन, ये जो मेरा अटैचमेंट है ना, मी एंड माइन, अहम ममेति, अहम ममेति. जब मैं कृष्णा, व्हेन आई एम इन लव विद कृष्णा, व्हेन आई एम अटैच्ड टू कृष्णा, व्हेन आई एम अट्रैक्टेड टू कृष्णा सो मच एंड आई एम रियली अटैच्ड टू कृष्णा, व्हाट विल हैपन, माय रिलेशनशिप विद नारायण विल फ्लोरिश. But it will not be selfish. It will not be my Narayan. It will be gift of Krishna. That's Narayan. And then I will treat someone else as the same, because that is gift from Narayan, gift from Krishna as well. You know, I will treat everyone the way I love my son Narayan. I will start loving other people like Narayan. And this what happens, this happens sometimes people think that when we get into bhakti, we might leave everything and go to jungles and all those sort of things. It might happen to some people, but that's not what Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam and Bhakti Yoga is about.
भक्ति योगा में अर्जुन वांटेड टू गो टू, अर्जुन सेड दैट नो, आई डोंट वांट टू डू दिस कृष्णा, बिकॉज मैं इनको मार के मेरे को क्या मिलेगा, राजा भी बना दोगे तो किन के साथ एंजॉय करूंगा, सारे भाई बहन तो मर जाएंगे। आई डोंट वांट टू डू दिस, आई वांट टू गो टू फॉरेस्ट, मैं वहां पर भीख मांग के रह लूंगा, लेकिन मैं लड़ाई नहीं करूंगा। कृष्णा बोलते ठीक है तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनको लगता कि ही वॉज डूइंग द राइट थिंग, ही वुड हैव सेड ओके गो, है ना, मैं लड़ लूंगा। या फिर कृष्णा बोलते अच्छा तू एक काम कर, तू पीछे बैठ, मैं मार देता हूँ सबको, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आई हैंडल इट, यू आर माई फ्रेंड, आई डू इट। नहीं, उन्होंने क्या बोला, no, 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 no. Pick up your bow and arrow. You have to fight because, and then he gave the whole spiel on why should he fight. है ना? So the some people who actually think that bhakti में जो आएगा, he will leave everything and go. If someone leaves everything and go, they might not be going for bhakti, because bhakti का मतलब होता है you do your duty in the mode of bhakti. है ना, यत करोषि यस अचनाशी यत जुहोषि दत्ताशी यत यस तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष मद अर्पणम, जो भी करना है मेरे को अर्पण करके करो। आपको जो करना है, जो देना है, जो लेना है, जो दान करना है ना, आपको जो भी करना है, डू इट एज ए ऑफरिंग टू मी। उनका ये मतलब नहीं था मेरे को आके ला दो, तुम्हें जो करना है मेरे को आके मेरे सामने रखो, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने बोला डू इट एज एन ऑफरिंग टू मी, दैट मीन्स यू डू इट बिकॉज इट्स गोना प्लीज मी, एंड इफ यू डू इट लाइक दैट, देन एवरीथिंग आई विल सॉर्ट आउट एवरीथिंग फॉर यू। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि छोड़ के चले जाओ, क्योंकि वो तो जा ही रहे थे। तो कई बार इस्कॉन के बारे में लोग कहते हैं कि यार हमारे बच्चों को छीन लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, हमारे बच्चे ब्रह्मचारी बन गए, है ना, एंड दिस इज नॉट राइट। तो ब्रह्म लोगों को लगता है ब्रह्मचारी का मतलब है वो कभी शादी नहीं करेगा। ब्रह्मचारी का मतलब हो गया कि राइट नाउ दे आर ब्रह्मचारी, so that they want to learn how to become become a pure devotee, and then once they have fully practiced their celibacy, then they can actually go and get married. There are a lot of people in the temple, they are actually now, पहले वो ब्रह्मचारी थे, उन्होंने अभी ट्रेनिंग ले ली है, now they're gonna enter into grahastha ashram, and they have such a amazing understanding of what grahastha is right now, because they know celibacy, you know. So now लोगों को लगता है कि यार ब्रह्मचारी बन गया मेरा बेटा, मेरा कुल अब नहीं बढ़ेगा, ये वो, दिस इज ऑल रबिश, बिकॉज दैट इज नॉट द पर्पज ऑफ भक्ति कि छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, दैट्स नॉट भक्ति। भक्ति मीन्स what can I do to do all my duty in a manner that is spoken to us by God, and fulfill the desire of the Lord while doing my duty? How can I fulfill my duty and satisfy the Lord? हमारे साथ क्या होता है, हाउ कैन आई डू माई ड्यूटी एंड रीप द बेनिफिट्स आउट ऑफ इट, दैट इज सेंस ग्रेटिफिकेशन, है ना। कामेंद्रिय प्रीति, क्या था, व्हाट वाज द वर्स, भूल गया, बट वर्स में भूल गया, देयर इज वर्स फ्रॉम चैतन्य चरितमृता, कामेंद्रिय प्रीति, फॉरगॉट, किसी को याद है, जिसमें बोलते हैं कि जो जब हम अपनी इंद्रियों को खुश करने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड काम, विच इज कॉल्ड लस्ट, बट व्हेन वी आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई कृष्णा, दैट इज कॉल्ड प्रेम, है ना। कृष्णेरे कृष्णेरे प्रीति something, प्रेम नाम और something like that, anyway. So what does that mean is, what is the definition? So इस अगर हम ये देखें तो उससे डेफिनेशन क्या होती है, लस्ट की क्या डेफिनेशन होती है, काम की डेफिनेशन होती है एनीथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू डू which has no relationship with Krishna, that is called lust. We think that lust means only physical or all those sort of things, but it's not. It's actually anything. काम, काम का मतलब होता है एनी, एक्चुअली कई बार बोलते हैं ना कि व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ लव, है ना। प्रेम का ऑपोजिट क्या होता है, घृणा, लेकिन नहीं, ये गलत है। प्रेम का ऑपोजिट होता है काम, लस्ट। लस्ट इज द ऑपोजिट ऑफ प्रेम, ठीक है। तो लस्ट का क्या मतलब होता है, एनीथिंग दैट इज टू डू, दैट एनीथिंग दैट वी डू विच हैज नथिंग टू डू विद कृष्णा, अपेरेंटली हमारे हिसाब से, देन इट्स बिकम्स लस्ट। अदरवाइज जैसे देर इज ए वर्स इन श्रीमद् भागवतम चतुश्लोकी भागवतम है,
रते रतम यत् प्रतीयेता न प्रतीयेता चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भाषो यथा तमः. So these are the four verses spoken to Brahmaji by Vishnu Bhagwan. Krishna actually spoken to him these four verses, जिसको कहते हैं चतुर्श्लोकी भागवतम. इन चार श्लोकों में, this is the second श्लोक of that चार श्लोक. इन चार श्लोकों का जो एक्सपेंशन है, यही ये 18,000 वर्सेस है ना, ये इसी का ही है. पूरा नॉट 18,000 वर्सेस, सॉरी, जितने भी इसमें कितने वर्सेस हैं अपने श्रीमद् भागवतम में, सारे वर्सेस उन चार वर्सेस से निकल के आए हुए हैं. सो दो, सॉरी, 700 प्रभु हरे कृष्ण. नहीं, भगवत गीता नहीं, श्रीमद् भागवतम. 18,000, yes, yes, हरे कृष्ण. 18,000. So all the 18,000 verses are coming from Chaturshloki Bhagavatam. So there is a Chaturshloki Bhagavad Gita and there is Chaturshloki Bhagavatam. So this Chaturshloki Bhagavatam is the four verse that was spoken to Brahmaji by Lord Vishnu, है ना, before he created the whole material universe. सो इसमें जो सेकंड वर्स है उसमें भगवान कहते हैं रते रते यत् प्रतीयेता न प्रतीयेता च आत्मनि तद विद्याद आत्मनो मायाम यथा भाषो यथा तमः. भगवान कहते हैं एनीथिंग एनीथिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू मी कंसिडर इट टू बी माया. एंड नेक्स्ट लाइन थी which is shadow in the darkness, consider to be maya just like a shadow in the darkness. तो इसका मतलब क्या है कि एनीथिंग, कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू ड्रिंक दिस वाटर, है ना, इफ दिस वाटर आई वॉन्ट टू ड्रिंक एंड आई हैव नो कंसेप्शन ऑफ वेदर इज प्रसाद और नॉट प्रसाद, आई हैवंट प्रेड ऑन इट एंड आई एम ड्रिंकिंग इट जस्ट टू सेटिस्फाई माई थर्स्ट, दैट इज माया एज वेल, दैट इज लस्ट एज वेल, है ना. बट इफ आई हैव ऑफर्ड दिस water to Krishna and say, Krishna, I'm offering this to you, and then I'm drinking this water to nourish this body so that I can use this body in the service of Krishna, then this water becomes Krishna's water. Then it's not no longer Maya, it's no longer a. So हम लोग जो भी काम करते हैं सिर्फ अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए करते हैं, तो that becomes Maya. And that is why in Krishna consciousness, what we do is we offer everything to the Lord, like anything that we eat, anything that we wear, anything that we do. Like even like my son, one day we got him a PJ mask का mask लाके दिया था उसको. He put the PJ mask in the altar. तो मैंने कहा, what are you doing? He said, oh Papa, you said na we should offer everything to Krishna, so I'm offering it. He doesn't do it anymore, by the way. Don't think that he is a Prahlad Maharaj now already. He's not. Nah, he did it once only. But it was incredible what he did. And then I realized, यार मैं भी नहीं करता हूँ यार. Now when I buy anything, I actually show it to Krishna. Krishna, look, this is what I bought, है ना. I just want to show you that this is what I bought, and obviously I bought it with the mercy of your, because Lakshmi is, Bhagwan ki consort hai. It's because of your mercy I'm able to buy this. Please let me use it in a way that I can always remember you. We can do that, ना? There's no problem. ऐसा नहीं है कि मैंने वहां सूट रखा और भगवान ने बोला अच्छा है तो मेरे को अच्छा लग रहा है मैं ले रहा हूँ. No, it doesn't do any of that. So we can, it's a very safe thing to do. Just do it. So, but when we do it, what happens is our whole consciousness changes. We actually start thinking on a different level, different plane, because we are no longer conscious of what is it for me. We are अभी तो अभी हमारे पास है what is it for me, लेकिन धीरे धीरे when we keep doing it, when we keep doing it, when we keep doing it, there will be a time when we actually start getting real attachment to Krishna, and that is the purpose of doing this bhakti. तभी तो कहते हैं नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या. नष्ट, क्या नष्ट हो जाता है? प्रायेषु, प्रायेषु मतलब स्लोली. नष्ट प्रायेषु अभद्र, अभद्र क्या है, कौन कौन से हैं? लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, प्राइड, ये सारे के सारे अभद्र हैं. नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु कैसे होते हैं खत्म? नित्यम भागवत सेवया. आप रोज श्रीमद् भागवतम का पाठ करो, 5 minutes, 10 minutes. Some people don't pick up the Bhagavatam because they think, oh my goodness, 18,000 verses, I don't know how I'm gonna finish it. अरे भैया, ये हम लोग कभी तरबूज लाते हैं, थोड़े देख के लाते हैं, अरे यार इतना बड़ा तरबूज है, मैं तो मर ही जाऊंगा. अरे थोड़ा थोड़ा खाओ भाई, इतना थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ा थोड़ा डालो अपने उसमें, 2 दिन में खाओ, 3 दिन में खाओ, दोस्तों को खिलाओ, है ना. ऐसे थोड़े सोचते हैं हम लोग कि अरे यार ये तो मर जाऊंगा मैं, इतना बड़ा तरबूज है. So same with Srimad Bhagavatam. What you do is you read 5 minutes a day.
5 मिनट्स प्रॉब्लम है, 3 मिनट्स से जाए, 3 मिनट्स प्रॉब्लम है, 2 मिनट्स से जाए, और जिनको 2 मिनट्स से भी प्रॉब्लम है, दे हैव सम रियल बिग प्रॉब्लम। सो उसके लिए देयर इज नथिंग वी कैन डू। सो वी नीड टू स्पेंड थोड़ा सा टाइम एवरी डे, वी स्पेंड अ लिटिल बिट ऑफ टाइम एवरी डे ऑन श्रीमद् भागवतम। आई एम नॉट जोकिंग, Srimad Bhagavatam is the only literature, whether it makes sense or it doesn't make sense, it will still purify you. लेकिन अगर आप पढ़ो रोज, if you read Harry Potter every night, doesn't matter how many times you read, no purification is there, because that's not transcendental literature. That is a mundane literature. Now, when you read transcendental literature like Srimad Bhagavatam, कहते हैं कि अभी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ना, if there is a South Indian person sitting here next to me, if they don't understand even one word that I'm saying, just because they're sitting in this Bhagavatam class, they're getting purified. This is the potency of. एक बार क्या हुआ, I did not know that, but one day I was listening to Srila Prabhupada's lecture. No, Srila Prabhupada. Somebody was talking about Srila Prabhupada, one of the devotees, one of his disciples. I can't remember who was it. They were saying that one day we went with Prabhupada to India. All the Western devotees went to India, and Srila Prabhupada had already started, those Bhagavatam classes everywhere. So they told all the disciples to go and attend this Bhagavatam class. So they all went and they came back, say, Prabhupada, wo to Hindi, they're speaking in Hindi. Srila Prabhupada said, don't worry, go and sit. It doesn't matter what language, you don't understand it, but your soul does. So go and sit there. Imagine, look at the potency of Srimad Bhagavatam, even if it doesn't make any sense, even if you don't understand one word, it's still purifying. So imagine if we can understand it. Imagine if we can make sense of it. Imagine if we can apply it in our life. Imagine if we start living and breathing Srimad Bhagavatam. Imagine the potency that we will have. And this potency is what was causing all of these people in Hastinapur to have this kind of emotion where Krishna is leaving their Krishna. ऐसा भी तो बोल सकते थे, अरे ये हमारा तो है ही नहीं, हमारा थोड़ा ही बंदा है, ये तो कहीं बाहर से ही आया था, बाहर जा रहा है, क्या प्रॉब्लम, जाने दो. No, because their heart were completely purified. Because, और कैसे purified हुआ था उनका heart? Because they were hearing, listening the name, fame, pastimes of the Lord. And that's what we have to do. That's why, आपको पता है, there was someone, आज क्या हुआ, I was talking to someone, I had a meeting, in between two meetings, I was sitting with this guy, he's Indian, and he was asking me that, because he saw, because हम लोग बैठे थे, तो मेरे को उसने देखा कि मेरे पास बीट बैग है और मैं कार में ही था, उसने मेरे को देखा कार में मेरे पास बीट बैग है, तो बोले, अरे आप इस्कॉन से जुड़े हो क्या? मैंने कहा हाँ हाँ हाँ. तो कहते हैं, तो यार आपने तो भगवत गीता पढ़ी होगी. मैंने कहा हाँ मैंने पढ़ी है. तो कहते हैं कि तो यार भगवत गीता आपने पढ़ी है, तो फिर आप जॉब क्यों करते हो? तो मैंने कहा कि क्यों क्यों नहीं कर सकता जॉब में, कोई गीता पढ़ी है. बोले भगवत गीता तो जो पढ़ता है उसको फिर जंगल नहीं जाना पड़ता. तो मैंने उसको बोला कि ऐसा नहीं है, आई डोंट नो, ही वाज फ्रॉम पंजाब. तो मेरे दिमाग में एक सेकंड के लिए आया, यार पता नहीं कौन से पत्थर के नीचे अपनी जिंदगी निकाली है इसने, कि ही इज आस्किंग मी दिस क्वेश्चन कि व्हाई यू स्टिल हियर. देन आई थॉट नो मैन, ही इज आस्किंग जेन्युइनली. तो आई टोल्ड हिम, आई सेड नो नो नो. फिर मैंने उसको बताना शुरू करा, मैंने कहा तेरे पास टाइम है? तो वो थोड़ा सोच रहा था, तो मैंने कहा फिर तो है तेरे पास, बैठ जा चुपचाप. अब उसने थोड़ा सा सोचा, तो फिर मैंने कहा अब नहीं उठेगा. फिर मैंने उसको बिठाया, मैंने उसको बोला ऐसा है, कृष्णा एक्चुअली स्पोक टू अर्जुन एंड अर्जुन वांटेड टू गो टू जंगल. मैंने सारा कुछ बताया उसको. एंड देन ही वाज सेइंग कि यार ब्रिजेश, मैंने पढ़ी है यार, मैंने पढ़ी है भगवत गीता, मैंने ट्राई करी है, लेकिन यार ये तो इतने सारे वर्जन है इसके, तो इतनी सारी 600 अलग अलग भगवत गीता मैं कैसे पढ़ूंगा? मैंने कहा देखो, वर्जन अलग अलग हैं लेकिन श्लोका सेम ही है. लेकिन अगर आपको रियल वर्जन पढ़ना है, भगवान वाला वर्जन, जो किसी ने अपने मन से नहीं लिखा है, एक्चुअली भगवान का जो मतलब है उससे लिखा है, तो ये वाली पढ़ो आप, इस्कॉन वाली. तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि वाई, लाइक इसकी क्यों पढ़ें? तो मैंने उनको बताया कि देर इज मैंने कहा ये, बोले कि हाँ लेकिन हाँ प्रभु आपको नहीं. उसने बोला ब्रिजेश आपको संस्कृत आती है? मैंने कहा संस्कृत मुझे इतनी नहीं आती है, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ तो थोड़ा बहुत मुझे समझ में आता है. तो कहते हैं यार ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि मुझे संस्कृत नहीं आती है.
मैंने कहा इस इट्स नॉट अ लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, नहीं है ये, तुम्हारा आइल्स का स्कोर नहीं है कि आप यहाँ पर इतने स्कोर ले आओ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैंने कहा देयर इज अ गाय कॉल्ड जाकिर नायक, ही कैन रीड संस्कृत लेकिन ही कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग बिकॉज हमारे जो स्क्रिप्चर्स है दे आर रिवील्ड स्क्रिप्चर, दे आर नॉट philosophical literature where you can, anybody who has done a PhD and super intelligent, they can read it and they will understand it. No, it can't. These scriptures is revealed. भगवान कहते हैं भगवत गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम। मतलब ये यथा माम प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते का मतलब होता है सरेंडर। जो जिस लेवल का सरेंडर करता है मैं अपने आप को उतना ही उसी लेवल का डिस्क्लोज करता हूं उसको। ताम तथैव भजामि अहम, है ना, मैं जिस हिसाब से वो मेरे को भजता है मैं उतना ही उसको रेसिप्रोकेट करता हूँ, उससे ज्यादा नहीं करता। तो मैंने कहा स्क्रिप्चर्स जो होता है ना, स्क्रिप्चर्स आदमी को उतना ही दिखाता है जितना उसकी औकात होती है। तो मैंने कहा कि द पर्सन हु इज अ संस्कृत स्कॉलर मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड भगवत गीता बिकॉज भगवत गीता विल नॉट रिवील टू हिम, the Bhagavad Gita will not be revealed to him. He can read and translate the verses from Sanskrit to English, but those verses will not have any transformational impact on that person because it is not, first of all, it cannot be understood by mental speculation and erudite scholarship. You cannot. You can be an amazingly erudite scholar, but you can't, doesn't make sense. It wouldn't make sense because it is revealed scripture. इट एक्चुअली रिवील्स इटसेल्फ। और मैं उसको ये बता रहा था, मैंने कहा देख मैं कल रात को चैप्टर 2 पढ़ रहा था भगवत गीता का एक, और मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, आई वॉज रीडिंग दैट, मेरे को लगा ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। मैंने आई हैव डन भक्ति शास्त्री कोर्स, आई हैव टॉट भगवत गीता, एक बार इंडिया में, एक बार हमारे भक्ति वृक्षा में, और एक बार इधर, दो दो बार, मतलब 5 बार तो 4 बार तो मैंने पढ़ा ही है। मैंने कहा आई हैव नेवर रेड दिस, एंड सडनली एज सुन एज आई वाज कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन इट, मेरे को समझ में आ गया कि जब मैंने 4 बार पढ़ा ना तो मेरी औकात नहीं थी इस वर्ष को समझने की। नाउ कृष्णा इज रिवीलिंग टू मी that now you might be ready to actually handle this verse. And that verse, you know what verse was it? द वर्स बिफोर, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक हु कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंतश्चे बुद्धियो व्यवसाय, उससे एक वर्स पहले, उसको वर्स मुझे याद नहीं है, बट आई वाज रीडिंग इट एंड आई वाज रीडिंग इट, आई वाज रीडिंग लाइक ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है यार, आई नेवर रेड दिस वर्स, आई नेवर एवर रेड दिस वर्स, एंड इट वाज ऑल अबाउट हाउ डू यू फोकस इट। जब कृष्णा टेक्स बैक अर्जुन का अटेंशन फ्रॉम एवरीवन एल्स टू ये वाला जो वर्स था व्यवसायत्मिका बुद्धि, उसका ब्रिजिंग वर्स था वो, and it was incredible. And then I was saying, oh my goodness, now I understand when they say our shastras are cryptic, itne cryptic and coded hai pura ka pura, you cannot understand it until and unless two reasons. One is you have a desire to understand it, and second, you have and the desire is pure as well. Agar aapki ye desire hai, you know what I'm going to do, I'm going to learn this and I'm going to tell all my friends ki how great scholar I am, like, then it will make no sense. You will not be able to understand it. But if you're trying to understand because you genuinely want to understand who you are, what is your purpose, why you're in this world, and how can you make sure that the opportunity that you have been given in this body of a human being, how can I make the best use of this? Then you study it and it will reveal itself. And there is another layer which is extremely important. If you have both these intentions, you want to really learn, you want to really understand, but if you want to understand with your own intellect, it is extremely hard, because unless and until you get a guru, when you take a guru, only then, when I say guru, it doesn't mean officially initiation ho jaye, that means you are actually reading and studying under someone else. Unless you do that, you will not be able to understand it, because um, idea of bhakti and idea of all of this is you need to be humble, है ना। There is शिक्षाष्टकम का जो थर्ड वर्स है, थ्रनादपि सुनिचेना तरोर इव सहिष्णुना अमानेना मान देना कीर्तनेया सदा हरि। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं थ्रनादपि सुनिचेना, तृण, तृण का मतलब होता है एक घास का तिनका, तृण, तृणादपि
Trinapi Sunichena. You should consider yourself as fallen as a blade of grass. Imagine आप किसी को बोलो, you're talking to your executive general manager and say, what, you should consider yourself to be the blade of grass. वो बोलेगा sign here and leave the office right now. क्यों? उसको क्या समझ में आएगा? You calling me blade of grass, but unless and until we consider ourselves a blade of grass का मतलब क्या होता है? We have no sense of pride. ठीक है? So now consider yourself as a blade of grass. And second line क्या है? तृणादपि सुनिचेना तरोरिव सहिष्णुना. तरु का मतलब होता है पेड़. सहिष्णुना का मतलब होता है like very as patient as the tree. Trees को आप काट दो, मार दो, कभी पलट के जवाब नहीं देता है. Unless and until it's in Harry Potter, जो वापस पलट के मारता है, but usually generally नहीं करते हैं, है ना? Real trees don't do that. So तृणादपि सुनेचेना तरोरिव सहिष्णुना. फिर उसके बाद थर्ड और फोर्थ लाइन क्या है? अमानेना, मान देना. अमानेना का मतलब होता है डू नॉट एक्सपेक्ट एनी इज्जत फ्रॉम अदर पीपल. डोंट एक्सपेक्ट एनी इज्जत. How difficult is that? Imagine who's saying that? Chaitanya Mahaprabhu, is Krishna himself, is saying that. Trinadapi Sunechana Taroriva Seshnana Amanena. Amanena matlab do not expect any izzat from anyone. मान देना. और दूसरा उसके बाद क्या है? You have to respect every single living being and non-living being. आपको पता है हमारे घर में झाड़ू को भी पाँव नहीं मारते हैं. नॉन लिविंग बीइंग है, नहीं मारते हैं, बिकॉज वी इवन रेस्पेक्ट झाड़ू, है ना? सो व्हेन यू डू दिस फोर थिंग, तृणादपि सुनेचेना तरोरिव सहिष्णुना. अमानेना मतलब किसी से इज्जत की डिमांड नहीं करनी. मान देना, सबको इज्जत देना. कीर्तनिया सदा हरि. ओनली दैट काइंड ऑफ ए पर्सन कैन एक्चुअली डू the kirtan of Lord. That means that is the kind of person, only that kind of person that can be purified enough to understand the scriptures. So that's why when you are reading and you're studying these scriptures under a bona fide spiritual master or under a bona fide Siksha Guru, what happens slowly is we started getting the mercy of the Lord through them, because now we are humble now. है ना? जैसे भगवत गीता का जो वर्स है ना, हम लोग we were discussing last time, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना. भगवान कहते हैं कि unless and until if you are तद्विद्धि प्रणिपातेन. प्रणिपात का मतलब होता है if you are really not surrendered, if you are not बिल्कुल नीचे गिर के पूरी इज्जत के साथ गुरु के सामने आप नहीं गिर रहे हो, तद्विद्धि प्रणिपातेन, उसके बाद पूरी इज्जत के साथ प्रश्न नहीं कर रहे हो, परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना, तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा. और आप इन लोगों से पूछो, और कैसे पूछो? पूरा हम्बल होके, पूरा उनके सामने झुक के, पूरा उनके सामने सरेंडर करके, देन यू आस्क द क्वेश्चन. ज्ञानी ना तत्वदर्शिना. ये जो ज्ञानी है, जो आप जो गुरु हैं, शिक्षा गुरु, ये लोग हैं, ये लोग क्या करेंगे? बिकॉज दे हैव सीन द तत्वदर्शिना, दे हैव सीन द ट्रूथ, दे विल बी एबल टू गिव यू द ट्रूथ. लेकिन इसीलिए इनको रिवील्ड स्क्रिप्चर्स बोला गया है. नाउ फॉर अस इट इज इजी टू read this and understand it because we are reading under the guidance of Srila Prabhupada. अगर यही चीज, फॉर एग्जाम्पल, अगर यही चीज मैं बोल रहा होता कि चलो लेट्स रीड दिस वर्स, लेट्स रीड द ट्रांसलेशन, एंड आई से मुतुल प्रभु आपके दिमाग में क्या आ रहा है आप बोलो, फिर मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं बोलूं, पूजा माता जी आपके दिमाग में जो है ना, रुचिता माता जी, ऋचा माता जी, यश, एवरीवन से व्हाटएवर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, दैट इज नॉट गोना बी अ भागवतम क्लास. भागवतम क्लास इज whatever we speak, whatever we contemplate, whatever we think is the meaning of it, that thinking is coming from the disciplic succession of our Shiksha and Diksha gurus. अगर हम अपनी mental speculation से बोल रहे होंगे, that what does that mean? That means we are not taking the humbler position. If we are not taking the humbler position, the scriptures is not going to reveal ourselves. If the scriptures is not going to reveal ourselves itself, then we will not be purified. If we not be purified, we will not be able to get rid of that stone heart that we have, and we will never be able to understand why these ladies are crying for Krishna, because they don't have that stone hearted. They're not stone hearted. Their heart is fully pure. They don't have a covering around us the way we have. And the whole process of bhakti is to get rid of that layer slowly and gradually.
But there are two ways of doing it. Once you do it with your own mental speculation, you go nowhere. And another thing is, you just follow the Guru, Sadhu, and Shastra. Like, for example, in order for us to go, for me to go from Caroline Spring to Point Cook, if I have to drive, I have, मेरे घर से बाहर निकल के देर इज ए राउंड अबाउट, चार डायरेक्शन है. इफ आई डोंट नो द वे, आई कैन ट्राई ऑल द रास्ता, है ना, 1-2 साल में पहुंच ही जाऊंगा कर, है ना. बट इफ आई हैव ए जीपीएस, then it will save me all this stupid time and effort. I need to be smart and intelligent. I don't have 2,000 years to live. Choti life hai. Whatever life I have, I need to make the best use of this bad bargain. So what I need to do is, I need to follow the most कहते हैं ना कि the most feasible and most appropriate, most economical way of getting there. And the best way to get there is if you use the proper GPS. If आपका GPS अच्छे से काम करता है, you just have to follow the instructions. So this is what we are trying to do. We are trying to follow the instructions of Guru, Sadhu, Shastra under the guidance of Srila Prabhupada. And if we, unless and until we keep doing that, we will go nowhere, है ना. और यहाँ पर जैसे आई थिंक, सो दिस गाय विच आई वाज टॉकिंग टू इन द कार, उसको मैंने बोला, जाकिर नायक का नाम सुना है? बोला हाँ. मैंने कहा उसको सब कुछ आता है, लेकिन ही डज नॉट अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ इट. He has no idea, he has no idea, because when what he's doing is, he has one agenda. His agenda is not to distribute love of God. His agenda is, how can I make more Muslims, है ना. Islam is actually designed to bring people closer to God and make people God conscious. For them, they think that for not them, for Zakir Naik, he thinks that everyone else is idiot and they don't know anything. What I'm going to do is, I'm going to bring everyone to this. And when he's doing that, you will not see even an ounce of compassion in his eyes. Never. You can see this very audacious pride and glow in his eyes, which looks like, oh my goodness, you know what, see how amazing I am. And that, my friends, is not the purpose of bhakti. Bhakti makes us so humble that we are ready to learn from an ant. We are not there to transform the whole world because we think we are better than everyone around us. We actually become so humble. We have become so humble that we actually take lessons from our kids. We take lessons from everyone around us. We take lessons from wherever we go. If things are really bad, we don't run away from it. We take full accountability of it, saying that, it's my own karmas. This whole thing set up around me is because so that I can grow, So if I take that instruction as it is, then I can grow in bhakti. And the karma, how the karma works is, karma is what? Karma is like किसी prison में क्या होता है? Prison is designed, मैंने I think discuss करा था, not last class, the class before. Prisons are designed for one thing, to transform the prisoners, है ना? But what happens is, if the purpose of हम लोग भूल जाएंगे प्रिजन का पर्पस, देन वी विल नॉट ट्रांसफॉर्म पीपल. तो क्या होता है, कई बार देखा है ना कि somebody is gone into prison for 7 years because they done something wrong. Now they behave really well. उन्होंने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया, तो कई बार उनकी सजा कम कर दी जाती थी. Because the purpose of prison is not to just punish you. Purpose of prison is to transform you. And some people get transformed through punishment. Some people can get transformed through confinement and things like that. And that's the purpose. इसी तरीके से हमारा जो कार्मिक रिएक्शन हमारे ऊपर आता है, जो हमने पाप करे हैं, उसका जो हमें वापस फल मिल रहा है, दैट विल हैपन ओनली फॉर अस फॉर आवर ट्रांसफॉर्मेशन. बट गेस व्हाट, because we are doing this bhakti, we are actually getting transformed. So sometimes some of the karma जो हमारे पर वापस आने वाले होते हैं, they don't apply to us because we are already transformed. So Maya Devi says, oh, this lesson that I was going to give him, it was to purify him, or it was to give him transformation on this particular aspect. Now he is already transformed, so I'm not going to give him that. तभी तो कहते हैं, when we get into bhakti, Krishna looks after us. All our karmas are under the control of Krishna. So जो हमें छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, छोटी मोटी या बड़ी कोई ऐसी भी प्रॉब्लम है, वो सारी कहाँ से आ रही हैं? Because of may not be from a prarabdha or aprarabdha. It will be it most likely for very strongly practicing devotees, it is actually mercy of Krishna.
if somebody is going through a very troubled time, it is making that person closer to Krishna somehow or other. We won't go into detail because I think next week Mithul Prabhu is gonna go deeper into that, because for the next couple of verses that's gonna be the theme. So we'll stop here. Granthra Srimad Bhagavatam ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai. Anybody has any questions, any comments, anything anybody wants to share for a few minutes? वो जी जो आपने बताया ना कि अ, भगवान सारे कर्म हमारे नहीं ले लेता, यानी मैंने कहीं पे ऐसा सुना था कि भगवान वो कर्म बाकी रखता है जिससे, जैसे आपने बोला ना कि जिससे हम उसके पास और जाए, वो ही वाले बाकी रखता है, यानी जो प्रॉब्लम्स हमें आती है ना, वो वही वाली बाकी रखता है कि जिससे हम और क्लोजर जाए। That's और correct. That's what बिल्कुल बिल्कुल Bhakti बिल्कुल Rasamrita सही है Sindhu said. हम्म हाँ, बोलो बोलो। बिल्कुल सही है प्रभु जी। जैसे मेरी लाइफ में जैसे चल रहा है, मैं जैसे देख रहा हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि नहीं, कुछ चीजें मुझे गिव अप करनी थी और मुझसे नहीं हो रही थी, लेकिन अभी हो रही है। तो देखो तो वो क्या क्या है होता है कि धीरे धीरे। ऐसे ऐसे मूड देती है लाइफ कि हाँ अभी मैं छोड़ना ही है इसको। अब तो छोड़ना ही नहीं, पड़ेगा। छोड़ना ही पड़ेगा। तो अच्छा है, हाँ, नहीं होना ही चाहिए। सही है प्रभु जी, ये पूरा आपको का एक पूरा भगवान का ही आप अरेंजमेंट है। 100%, 100% Prabhu. I'll tell you something. I'm gonna stop recording first. Anybody has any questions before I stop recording? Any questions? Any comments? Are Ruchita Mataji, are you still in Dham? No, Prabhuji, I'm back. Hare Krishna. मतलब जी कब वापस आ Hare गए? Krishna. मैं कल या परसों परसों आई थी। धाम तो पूछो मत, बहुत Are ही you? अमेजिंग था। और एक्चुअल में मैंने धाम का दर्शन बिल्कुल वैसे किया जैसे करना चाहिए। क्योंकि सिंस आई हाँ, अराइव्ड मेरी बॉडी में स्वेलिंग हो गई है, पैरों में स्वेलिंग हो गई है, तो आई कैन नॉट वेयर एनीथिंग लाइक चप्पल वप्पल जैसे होता है ना। तो पूरा वेरी धाम गुड। मैं मैंने कहता हूँ पूरी घूमो। बिना चप्पल के किया है। वेरी गुड। और धाम इतनी की गर्मी मिट्टी। वहां पे उसके बाद भी, मतलब यहाँ आने के बाद आई कैन फील द पेन देयर। इट वाज लाइक कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, चलते चलो चलते चलो। ब्यूटीफुल। देखो दिस इज इट। आपका इट वाज आप सो गुड। आप जाके आए हो। आई एम प्रीटी श्योर यू वुड हैव प्रेड फॉर ऑल ऑफ अस एंड सम ऑफ द प्रेयर्स डेफिनेटली प्रभु जी, हाउ कैन आई फॉरगेट यू ऑल। हाउ कैन आई फॉरगेट यू ऑल। एंड प्रभु जी पता है वहां मंगला आरती तो माय गॉड सो मच ओहो रश। हो। यस यस यस, मैं नॉट लाइक। मतलब मुझे लगता है पूरी दुनिया उठ जाती है मंगला के लिए वहां पे। दिस इज Haven't द होल felt ईयर। that energy and vibrations ever. They do it every day, Mataji. There is no in Melbourne. It's only for festivals, na. Over there, it's every day the same amount of people. More people come actually. Yeah. If you go on Purushottam month, na, you actually don't have place to stand even. It is so Hmm. packed, but still Right. blissful. Still blissful. एक Nobody, दिन nobody's any rush. एक दिन तो क्या हुआ प्रभु जी, आई वाज मेरा थोड़ा दूर था इस बार ना, जहाँ पे हम स्टे कर रहे थे, वी आर स्टेइंग इन गीता भवन। तो इट Uh-huh. वाज लाइक लिटिल बिट वॉक फ्रॉम द टेम्पल। Uh-huh. सो आई वोक अप अर्ली, बट स्टिल मुझे ऐसा लगा मैं 5 मिनट लेट ना हो जाऊं, एंड आई कुडंट रियली लाइक वॉक फास्टर। मैं Uh, पहुंची वहां, इतना लंबा क्यों, मुझे लगा जब तक मैं अंदर जाऊंगी आधी आधी तो मिस हो जाएगी। मैं थोड़ा आगे बढ़ी, वहां से ना खाली आई थिंक सन्यासीज को अंदर जाने देते हैं, या uh, जो स्पेशल पीपल अराउंड इन द टेम्पल दे एंटर। तो मैं uh, चली गई प्रभु जी, नोबडी स्टॉप्ड मी, नहीं तो ऐसे जाने नहीं देते थे। चेक योर बैग। आई वाज लाइक थैंक गॉड कृष्णा ने बचा लिया, वरना मैं आज क्यों में खड़ी रह जाती। तभी तो ये तो यथामाप सच थिंग्स प्रपद्यते हैपन। है। हाँ, सच में। और आने का मन नहीं कर जितनी रहा आपकी था, सच्ची श्रद्धा है। बोलूं। क्या आने का मन नहीं कर रहा था? बिल्कुल भी वापस आने का मन नहीं कर रहा था। आई विश आई कुड हैव स्टेड फॉर लॉन्गर। दैट्स ऑसम, दैट इज रियली गुड। ऐसा ही होना चाहिए, धाम का यही प्रभाव Because होना चाहिए। last time I visited 2 years back, I don't know it's shift of consciousness or what, but this time I felt Yes. absolutely different from Mayapur Dham. Last time I visited Vrindavan also and Mayapur also. But somehow I felt better हाँ at Vrindavan, maybe because यहाँ पे crowd थोड़ा सा वैसा होता है। But इस बार मुझे कुछ हाँ इफेक्ट नहीं किया। लास्ट टाइम मुझे ये चीजें इतना मैटर कर रही थी, और इस बार मुझे लग रहा था यार हाँ। सबके भाव कितने अच्छे हैं, देखो यहाँ पे, मतलब the feeling was so different from Mayapur. I remember I told you also about Mayapur last time. Yes, yes, you did, yeah, you did, yes, you Yeah. did. And And that's this what time I'm it was. saying is आपका जो perception है ना, the perception that you carry, Mm-hmm. you will see it. So now Yeah. you had a different perception. You're looking from a Shastra Chakshu.
Right. scripturalize rather than, our materialize. So that is the only way to actually go and visit Dham. It's the Absolutely, only way. Prabhuji, and also because we keep listening to you all every time ना, उससे हमारी लाइफ में बहुत चेंज आता है. But every time when we listen, Yeah, that knowledge, मतलब मुझे ऐसा लगता है I cannot leave it now, even for a day. that's, Same with Puja Mataji, that I is can understand. that is actually really good. There is no better attraction than attraction to Srimad Bhagavatam. There is no Imagine better. Gitanshi was looking at her iPad and saying, "Tomorrow is Bhakti Vriksha Day." I'm like, see, how much we are attached to Bhakti Vriksha, Bhagavatam classes, that Oh, sitting here we are longing, when are we getting back? That's amazing. And imagine, मैं अभी आप बोल रहे थे ना, तो I was thinking about my life, 10 years ago. And like, there is no way कोई मुझे बताता ना कि this is what's gonna be happening in my life, I would have said you gone crazy or something. But now look at this transformation that, I'm here on a Thursday night and we're discussing Shrimad Bhagavatam. The only Right. difference is I'm wearing a suit instead of kurta pajama and tilak nahi hai abhi. But bhav wahi hai. you know Exactly. प्रभु जी रिकॉर्डिंग बंद करो, मुझे कुछ बताना है. And Prabhu, Correct. and Prabhuji, the most amazing thing that I really feel that every time when there is a class, we have, so much excitement as if it is a new True. class for us. Oh It is yeah, going yeah. to be a True. class for first time ever. Prabhuji, So I don't know how it comes. It's all comes by Lord Krishna mercy, and how that's how most nectarian it is. Yeah. Like every time it is like new and fresh and so much nectar, Prabhuji. Thank you so so much, true. Prabhuji. To you. So प्रभु जी true. आपका मैं मेरी भाव है बात माता बता जी, दूं दिस प्रभु इज जी. योर भाव. है ना, दिस इज योर भाव बिकॉज ऑफ you're tuning into that. एंड ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान आपको वही देता है जिसके लिए आप ट्यून इन कर रहे हो. है ना. So that is amazing.